Hello everyone. As we saw in the previous video about the estimation, so today we will study beyond that and discuss about the consistency of an estimation. What is the consistency of an estimator, or what is property of consistency? So today we will see what the consistency is and how it is calculated. So without wasting our time, let's begin with the definition of consistency. But before that, we should familiar with Chebyshev's inequality and the convergence in probability. So we shall start with the Chebyshev's inequality. So today we will discuss our first topic, which is Chebyshev's inequality. So what is Chebyshev's inequality? So if x is a random variable with mean mu and variance sigma square, then for any positive number k, we have probability of x minus mu is greater than equal to k sigma is less than equal to 1 upon k square, or probability of x minus mu is less than k sigma is greater than equal to 1 minus 1 upon k square. So this is very important theorem, which is known as Chebyshev's inequality. So let we study the advanced version of Chebyshev's inequality. So let we assume k sigma is equals to epsilon. Okay. Or if you don't want to confuse with the word, let's assume it's c, which is greater than 0. So now the probability of x minus mu is greater than equal to c is less than equal to sigma square divided by c square, and probability of x minus mu is less than c is greater than equals to 1 minus sigma square upon c square. Okay, so this is our Chebyshev's inequality. Now we will study the convergence in probability. चलिए देखते हैं कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी क्या होता है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि you can also understand that x minus mu is greater than equal to c is less than equal to variance of x divided by c square. दोनों का एक ही मतलब है. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी. Convergence in probability. So the convergence in probability is very important topic, और जब तक हमें convergence in probability अच्छे से समझ में नहीं आएगा, हमें consistency को समझना बहुत ही मुश्किल है. तो हम convergence in probability की definition के साथ आगे बढ़ते हैं. Let a sequence of random variables x1, x2 up to xn is said to converge in probability to a constant A if
for any epsilon greater than 0, we have limit n tends to infinity, probability of x minus a is less than epsilon is equals to 1, or limit n tends to infinity, probability of x minus a is greater than equal to epsilon is equals to 0. दोनों की एक ही बात है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो समझने की है वो ये है कि इसका मतलब क्या है. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1. यानी कि ये कहना चाहता है कि जब नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा होंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल है x, वो, या इसे हम xn ले लीजिए, जो सीक्वेंस की बात हो रही है इसलिए xn इज कन्वर्जेंस टू a, यानी कि वो a के लगभग बराबर है. मीन्स एप्सिलॉन हमारा क्या है, इज ग्रेटर देन 0, लेकिन ये बहुत ही छोटा नंबर है. और 1 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 कब होती है, जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की, यानी कि हमेशा ऐसा हो रहा है. जब हमेशा प्रोबेबिलिटी, अगर 1 का मतलब क्या है कि हमारे पास श्योर वेरिएबल है कि हाँ ये ही होना है, तो हम यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा हमेशा होगा किसी एक छोटे नंबर के लिए कि x माइनस a का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है. यानी कि अगर एक तरह से नेग्लेजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीरीज xn है वो और जो a है वो लगभग बराबर है. और ऐसा हमेशा होना चाहिए, इसीलिए लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1. मीन्स हमेशा ये होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि xn इज कन्वर्जेस टू है, और इसे लिखने का तरीका है, एंड वी राइट xn is converges to a in probability as n tends to infinity. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी क्या है? Okay, so what is the definition of consistency? An estimator Tn is equals to T of x1, x2 up to xn based on a random sample of size n. Okay, so is said to be consistent estimator of gamma theta, or theta belongs to the parameter space, if Tn converges to gamma theta in probability. Okay, so क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हम कि an estimator Tn is based on a random sample of size n is said to be a consistent estimator of gamma theta if Tn is converges to gamma theta in probability. Means what? Means Tn is converges to gamma theta in probability as n tends to infinity. Okay, इसी की एक और परिभाषा हम क्या देख सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन क्या देख सकते हैं, जैसा हमने अभी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी को पढ़ा कि Tn is consistent estimator if Tn is consistent estimator if
for every epsilon greater than 0, कोई छोटा number, and another number nu is greater than 0, there exists a positive integer n which is greater than m of epsilon comma n, such that probability of Tn minus gamma theta is less than epsilon tends to 1 as n tends to infinity. मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो डिफरेंस है यहाँ पर Tn और गामा थीटा के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से भी छोटा है, और ऐसा हमेशा होना चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी, जब हमेशा ये पॉसिबल हो. मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ Tn माइनस गामा थीटा इज लेस देन एप्सिलॉन टेंड्स टू 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. और इसी का दूसरा रूप क्या हो सकता है, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ Tn माइनस गामा थीटा इज लेस देन एप्सिलॉन is greater than 1 minus nu. Okay, is greater than 1 minus nu means 1 minus nu. Nu should be a very small positive number, very small positive number. तो दोनों का मतलब एक ही है. ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज कंसिस्टेंसी? एन एस्टिमेटेड Tn based on the random sample of size n is said to be the consistent estimator of gamma theta if Tn is converges to gamma theta in probability. What is meaning of the convergence of in probability? Convergence in probability means a sequence of random variables x1 up to xn is said to be the convergence in probability to any constant a or being any constant b if for any epsilon greater than 0 limit n tends to infinity probability of xn minus a less than epsilon equals to 1. Okay, सो मुझे लगता है कि आपको कंसिस्टेंसी समझ में आया होगा. चलिए एक कुछ एग्जांपल देते हैं जिससे आपका ये जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा वो और क्लियर हो जाएगा जब आप सवाल करेंगे तो. ओके ओके, नाउ इसी की कुछ प्रॉपर्टीज की भी देख लेते हैं. दैट इफ x1 x2 up to xn is a random sample from population with finite mean. finite mean का मतलब हमारे पास क्या है, that is expectation of xi equals to mu is less than infinity, means this is finite. Okay, so by a weak law of large numbers we have xn bar is equals to 1 upon n summation of xi. This converges to expectation of xi in probability. Okay, as n tends to infinity. चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी देख लेते हैं ताकि आपका ये भी एक जो कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर हो जाए कि ये कहाँ से आया और हमने अचानक से ये कैसे यहाँ पर लिखा है. ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है. हम देखते हैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है. सो इसके स्टेटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं. ये व्हाट इज़ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, दैट ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है हमारी चेबिशेव इनइक्वालिटी की, दैट x1 x2 up to xn be a sequence of random variables and mu1 mu2 mu n be their respective expectations. Okay, and let bn is equals to the variance of x1 plus x2. हमने कुछ
एक वेरिएबल मान दिया जो कि एक फाइनाइट वेरिएबल है बिकॉज दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी लेस देन इन्फिनिटी, देन probability of x1 plus x2 plus xn divided by n minus expectation of x1 plus x2 plus x1 divided by n is less than epsilon is greater than or equal to 1 minus mu. Okay, so which is equals to the probability of x1 plus x2 plus xn by n minus mu1 plus mu2 plus mu n divided by n is less than epsilon is greater than or equal to 1 minus mu. So this is our weak law of large number, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और इसी का एक और हमारा जो सॉल्यूशन मिलता होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टेंड्स टू 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. सो चलिए हम वापस उसे देखते हैं. Let x1 x2 up to xn is a random sample from the population with finite mean mu, then expectation of xi is finite, then by weak law of large number xn bar हमने अभी देख लिया, ये रहा xn bar. ये कैसे xn bar है, x1 plus x2 plus xn by n, xn bar minus expectation of xi that is mu1 plus mu2 plus mu3 plus mu n by n. ओके, तो अब इसको यहाँ से समझिए कि अगर सपोज हमारा x1 x2 up to xn is independent and identically distributed random variables है. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, mu1 mu2 mu3 mu n सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, mu1 equals to mu2 equals to mu3 equals to mu n equals to mu. सो ये क्या हो जाएगा, mu1 plus mu2 plus mu n by n is equals to n times of mu by n which is equals to mu. तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि ये जो xn बार है minus mu is less than epsilon is greater than equal to 1 minus mu for probability. Okay, means xn bar is convergence to mu in probability. और हमें पता है कि if xn bar is converges to mu in probability, it means xn is consistent estimator. ये हमने कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी से देखा कि if tn is converges to gamma theta in probability means tn is a consistent estimator of gamma theta. तो यहाँ से हमें क्या मिला, means xn bar is consistent estimator of mu. तो xn bar क्या है हमारा, सैंपल मीन, mu क्या है, पॉपुलेशन मीन, therefore sample mean is a consistent estimator for the population mean. तो ये यहाँ पर हमारा सबसे important relation था जो हमने यहाँ पर देखा, that the sample mean is always a consistent estimator of the population mean. तो हमने क्या देखा, हमारा main statement यहाँ पर, that sample mean xn bar is always a consistent estimator of the population mean. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है. ओके, दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पर कि सपोज हमारे पास कोई एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर दे रखा है, इसका बिहेवियर देखते हैं हम, द कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टीज की देखते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट एन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर Tn of gamma theta, then infinitely many such estimates can be constructed. Okay, means if we have given, suppose let Tn is a consistent estimator of gamma theta, means what we have given, that Tn is converges to gamma theta in probability. या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं that probability of Tn minus gamma theta is less than epsilon tends to 1 as n tends to infinity. या बार बार लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, चलिए, तो
if Tn is consistent estimator of gamma theta, then इसी से आगे हम देख रहे हैं, then infinitely many such estimators can be constructed. Okay, means क्या कहना चाह रहा है, Tn dash is equals to n minus a divided by n minus b. लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए n में, चाहे क्वाड्रेटिक रिलेशन हो, लेकिन पावर हमेशा सेम होनी चाहिए इन दोनों की. इसको हम क्या लिख सकते हैं, n को कॉमन ले लो, 1 माइनस a अपॉन n, 1 माइनस b अपॉन n इंटू Tn टेंस टू Tn to gamma theta and probability as n tends to infinity. तो जैसे ही n infinity होगा तो this is tends to 0, this tends to 0, so हमारे पास Tn बचेगा. तो ऐसे कई सारे एस्टिमेटर्स हम बना सकते हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं कंसिस्टेंसी की इनवेरिएंस प्रॉपर्टी. इनवेरिएंस प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, if En is a consistent estimator of gamma theta and psi of gamma theta is a function of gamma theta, then psi of Tn is consistent estimator of psi of gamma theta. Okay, so what we have given that if, क्या कहना चाह रहा है ये हमें, if Tn is converges to gamma theta in probability as n tends to infinity, okay, and psi of gamma theta is continuous, then psi of Tn is converges to psi of gamma theta in probability. Okay, so this is the consistent invariance property. ओके, चलिए आगे हम देखते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशंस क्या क्या है, किन किन कंडीशंस पर हम ये कह सकते हैं. सो हम देखते हैं सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, यानी कि यदि ये प्रॉपर्टीज इसमें, okay, so what the sufficient condition for the consistency is that, okay, let assume it is a theorem, let Tn be a sequence of estimators. ओके, सो Tn क्या है हमारा, सीक्वेंस ऑफ द एस्टिमेटर्स. बहुत सारे एस्टिमेटर्स यहाँ पर हमारे पास हो सकते हैं. सीक्वेंस ऑफ द एस्टिमेटर्स सच दैट फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द पैरामीटर स्पेस. फर्स्ट कंडीशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn इज इक्वल्स टू गामा थीटा, या expectation of Tn is tends to gamma theta as n tends to infinity. And second condition, variance of Tn tends to 0 as n tends to infinity. यदि ये दो कंडीशन satisfy होती है, then we can say that Tn
is a consistent estimator of gamma theta. Okay, so this is very important theorem. You all should remember this, that let Tn be a sequence of estimators such that for all theta belongs to parameter space, if expectation of Tn tends to gamma theta as n tends to infinity and variance of Tn tends to 0 as n tends to infinity, then Tn is a consistent estimator of gamma theta. Okay, so we can understand this by some examples. Okay, let's see few examples for that. So where we are, okay, suppose prove that, let an example that prove that in sampling from a normal, that mu comma sigma square population, the sample mean is a consistent estimator of mu. Okay, so question is that prove that sample mean is a consistent estimator for mu. So we have for the sequence xi mu comma sigma square. So we have sample mean x bar. Okay, so x bar is converges to mu comma sigma square by n. ये हमें पता है, ये हमेशा ऐसा होता है. क्यों होता है इसके लिए हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू and the variance of x bar is equals to sigma square by n. So thus for n tends to infinity, expectation of x bar is equals to mu and the variance of x bar is equals to 0. Means what we have, हमारी ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करिए, that expectation of Tn is equals to gamma theta and the variance of Tn tends to 0. So हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, that expectation of Tn is mu and mu is what, parameter, and variance of x bar equals to gamma theta. Means what we can say, that sample mean x bar is consistent estimator of gamma theta. Okay, so let we understand one more example. Okay, so let we have this example of sorry. So let we take one another example is that okay, this is an example of ISS, I think 2019, paper number 2. That x1, x2 up to xn with the independent and identically distributed random variable with expectation of xi is equals to mu, expectation of xi square is less than epsilon, then the consistent estimator of mu is what? Okay, so this is the question of Indian Statistical Services. Let's check the example. So what we have given is that expectation of xi is equals to mu. So first condition we have given. So for consistency, what we have studied is that we should know the two sufficient condition is expectation of Tn is tends to gamma theta and variance of Tn tends to 0. Okay, so the expectation of Tn mu which is given. So now we have to prove that the variance of this xi is tends to 0 as n tends to infinity. And second condition we have given that expectation of xi square is less than
epsilon means it is finite. Okay, let me check by the solutions. So the first we have given is 2i square divided by n into n plus 1, the summation of xi. Okay, so let us check a variance of 2i square divided by n into n plus 1 into summation xi, which is equals to we all know that variance of ax equals to a square into variance of x. Okay, so we have 4 divided by n square into n plus 1 ka whole square. Okay, so I की power 4 into summation of variance of xi. So what we have, okay, so 4 by n square into n plus 1 ka whole square. So for I1, x1 plus 8 variance of x2, so 1 into variance of x1 plus, can understand this like summation of I square xi. Okay, so variance of x2 like that. So this is 4 upon n square into n plus 1 ka whole square into sigma square into 1 plus 2 to the power 4 plus 3 to the power 4, something like that. So this is tends to infinity as n tends to infinity. Okay, so let me check the b part. So this is just by visualization we can understand that this is a divergent series, so this cannot be tends to 0, cannot be tends to 0, so option A is not possible here. So let me check the option B, that is 2 by n into n plus 1. Actually this is the question of ISS, so you should have only 2 to 3 minutes to solve this type of question, so you should have to be smart that just visualization in your mind that this should be the divergence of the convergence series. So ये हमें सामने ही दिख रहा है कि ये 0 नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सबको सॉल्व कर सके. सो ओके, लेट मी चेक द सेकंड क्वेश्चन. So the variance of 2 by n into n plus 1 into summation I into xi, which is equals to 4 divided by n square into n plus 1 ka whole square. Okay, so this is variance of 1x1 plus 2x2 plus 3x3 and so on plus xn. Okay, so which is equals to 4 by n square into n plus 1 ka whole square, so which is equals to 1 into variance of x1 plus 4 into variance of x2 plus 9 into variance of x3 and so on, so n square into variance of xn. So which is equals to 4 by n square into n plus 1 का whole square into variance of xi. Since ये सारे independent है तो सबका sigma square है. So this is equals to sigma square into 1 plus 4 plus 9 plus n square. So this is the sum of the square of first n natural number. Okay, so this is 4 by n square into n plus 1 का whole square, sigma square into n plus 1 to n plus 1 by 6. Okay, so let's just common n, so 4n square by 6
sorry, 4/6 sigma square n 1 plus 1 upon n 2 plus 1 upon n, this is n cube, and divided by n square into n square into 1 plus 1 upon n ka whole square. So this should be cancelled. So what we have is that 2/3 sigma square 1 plus 1 upon n 2 plus 1 upon n divided by 1 plus 1 upon n का होल स्क्वायर into n. So हमारे पास डिनोमिनेटर में n है. So for limit n tends to infinity, this tends to 0 and n tends to infinity. So ये tends to 0 हो रहा है for n tends to infinity. So the option number B is correct. Okay, so इसको एक बार आप वापस देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन. ठीक है, आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे, एक दो कुछ कंसिस्टेंसी के एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम एफिशिएंट एस्टिमेटर के बारे में पढ़ेंगे. So okay, thank you very much today.